In the previous video, we have completed hypothalamus and its hormone, that is releasing factor and inhibiting factor. And now in this video, we are going to learn the pituitary gland, उसका structure and hormones of pituitary gland. तो सबसे पहले कि pituitary gland का location कहाँ है? तो हमें पता है कि pituitary gland is a small tiny glands which is hanging in the brain region. हमारे brain के region में hanging region. And this small tiny glands is located in the bony cavity. And that cavity उसे हम कहते हैं sella turcica. And this gland is attached to the hypothalamus. That is the part of the forebrain by a stalk. So this is first क्या है? Regarding pituitary gland, it is located in a bony cavity. कहाँ है? Located in bony cavity. And that bony cavity is known as sella turcica. Cavity को क्या कहते हैं? Sella turcica. And second important की जो pituitary gland है, that is attached to the hypothalamus by a stalk and attached to the hypothalamus कैसे? Through a stalk or by a stalk? By a stalk. So this is first position. क्या है? A teeny gland which is hanging in the brain region, which is located in a bony cavity called sella turcica and is attached to the hypothalamus by a stalk. Second, pituitary gland का अगर हम internal structure देखेंगे तो anatomically pituitary gland is divided into the two parts. First one is adenohypophysis and second one is neurohypophysis. So second one is अगर पिट्यूटरी ग्लैंड को हम यहाँ कंसीडर करेंगे तो पिट्यूटरी ग्लैंड एनाटॉमिकली मतलब इंटरनली एनाटॉमिकली डिवाइडेड इनटू टू. फर्स्ट वन इज एडिनो हाइपोफाइसिस एंड सेकेंड वन इज न्यूरो hypophysis. जैसे anatomically divided. दो पोर्शन में anatomically. Adenohypophysis also consists of the two portions. Number one, pars distalis. Pars distalis, and second one is pars intermedia. We'll go one by one, right? Adenohypophysis have the two portions. First one is pars distalis and pars intermedia, and the portion of neurohypophysis is known as pars nervosa. Right? अब ये जो portions है adenohypophysis के, they produce the anterior lobe of pituitary. Anterior lobe of pituitary. Whereas pars nervosa बनाता है और उसे कहते हैं posterior lobe of pituitary gland. So clearly, the pituitary gland anatomically divided into the adenohypophysis and neurohypophysis. हम structure देखेंगे. Then adenohypophysis have the two portions. First one is the pars distalis and second one is the pars intermedia. Together constitute or called as the anterior lobe of the pituitary gland. Then neurohypophysis, the portion is known as the pars nervosa, and pars nervosa is also called as the posterior lobe of the pituitary gland. Right? अब यहाँ पे मैं उसका स्ट्रक्चर बताऊंगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड कैसी है. This is the small teeny gland which is hanging in the brain region. That is pituitary gland. And ये जो ऊपर है
this and this portion, ये क्या है? This is hypothalamus. क्या है ये? This is hypothalamus. Right? अब हमें पता है कि हाइपोथैलेमस में क्या है, तो हाइपोथैलेमस हैज अ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, एंड उसे हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स. तो यहाँ पे क्या है? दीज आर न्यूरॉन्स. ऐसे ड्रॉ करते हैं, दीज आर ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स. अब ये जो पार्ट है, दिस इज anterior lobe of pituitary gland. This is anterior lobe of pituitary gland. एंड दिस पार्ट जो है दैट इज पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. एंड उसके ऊपर हाइपोथैलेमस इट इज अटैच्ड बाय स्टॉक, स्टॉक से अटैच है. राइट? अब एंटीरियर लोब का ये स्ट्रक्चर हो गया टू पोर्शंस, एंड यहाँ पर इन बिटवीन देयर इज अ स्मॉल पोर्शन, there is a small portion, and that is middle lobe of the pituitary gland. उसे क्या कहते हैं? Middle lobe of the pituitary gland. Middle lobe of pituitary gland. Right. So this is anterior lobe of pituitary gland. This is posterior lobe of pituitary gland, and there is a small lobe. This, and that is known as middle lobe of pituitary gland. अब ये जो है पार्स डिस्टलिस एंड पार्स इंटरमीडिएट एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, ये ह्यूमन में क्या है? दिस पार्स इंटरमीडिएट इज कंप्लीटली मर्ज इनटू पार्स डिस्टलिस. ये पूरा का पूरा मर्ज हुआ. कहां पे? इन ह्यूमंस. ह्यूमंस में क्या है? ह्यूमंस में पार्स इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिया क्या हुआ है? इज कंप्लीटली मर्ज्ड into pars distans, pars distans. Right? अब देखो ये न्यूरॉन्स है, यहां पर भी न्यूरॉन्स निकालूंगा. Right? So these are neurosecretory cells. और उसे हम क्या कहते हैं? We call it as neurons. मतलब हाइपोथैलेमस में न्यूरॉन्स है, these हार्मोन्स को these neurons produce the hormone, इसलिए हम कहते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स. राइट? अब क्या होता है कि यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब है, एंड एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस द हार्मोन्स अगेंस्ट द हाइपोथैलेमस. हमें पता है हाइपोथैलेमस कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करता है? Hypothalamus produces the two hormones. First one is releasing factor, and second one is inhibiting factor. RF मतलब releasing factor which stimulate the pituitary for the synthesis and secretion. IF मतलब inhibit the pituitary को क्या करते हैं? Inhibit करती है for the release of hormones. एक बढ़ावा देती है, एक कम करती है. That is. अब देखो यहाँ पे एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के हार्मोन्स कौन से हैं? तो फर्स्ट इट प्रोड्यूस द हार्मोन, फर्स्ट ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करती है? सेकेंड यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन. सेकेंड प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन. थर्ड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. फोर्थ adrenocorticotropic hormone. Then GH मतलब growth hormone. Then prolactin, thyroid stimulating hormone. Adrenocorticotropic hormone. Then luteinizing hormone LH, and then follicle stimulating hormone. These hormones 1, 2, 3, 4, 5, 6 are produced by the anterior lobe of the pituitary gland. Middle lobe of the pituitary gland produces only one hormone, that is melanocyte. Melanocyte stimulating hormone. Only one. उसे कहते हैं MSH, melanocyte stimulating
Then posterior lobe of pituitary produce. Posterior lobe of pituitary gland do not produce the hormones. It only store and release the hormones. कौन से? One, oxytocin, and second one is ADH, antidiuretic hormone, or it is also called as vasopressin. So these are the two hormones, oxytocin and ADH, that is antidiuretic hormone, is produced by hypothalamus. पोस्टीरियर लोब क्या करती है? ओनली स्टोर्ड एंड रिलीज, उसको स्टोर करके रखती है एंड जब कमांड आती है तो रिलीज करती है, राइट? अब देखो ये हार्मोन्स हो गए, एंटीरियर लोब के हार्मोन्स, एंड पोस्ट मिडल लोब के हार्मोन, एंड पोस्टीरियर लोब के हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस की न्यूरॉन्स है which produce the hormones प्रोड्यूस करते हैं, एंड थ्रू द एक्सॉन यहाँ हार्मोन आते हैं, फिर यहाँ से देयर इज अ ब्लड वेसल which divides, यहाँ आने के बाद वो ब्लड वेसल डिवाइड्स होती है एंड फिर से यूनाइटेड ज्वाइन टुगेदर मेक दिस सिस्टम is known as hypophyseal portal system. उसे क्या कहते हैं? This system we call it as hypophyseal portal system. यहाँ पे लिखा हूँ, ये मिटा दो। ये जो सिस्टम है, this system is known as hypophyseal portal system. Hypophyseal portal system. फिर यहाँ आने के बाद it once again divides and फिर से यूनाइट एंड बाहर है। अब देखो हाइपोथैलेमस का काम क्या है? टू सीक्रेट द रिलीजिंग फैक्टर, रिलीजिंग फैक्टर सीक्रेट करना। ये रिलीजिंग फैक्टर उसने सीक्रेट किया, यहाँ पर अंदर जाएगा, इट रन्स, यहाँ आएगा, फिर एंटर इनटू द पिट्यूटरी ग्लैंड, दिस इज आरएफ रिलीजिंग। then these releasing factor enter into the blood vessels and through it, and finally it reach to the target. अब देखो रिलीजिंग फैक्टर थ्रू हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम एंटर इनटू द पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड उस रिलीजिंग फैक्टर के अगेंस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस द इट्स ओन हार्मोन। रिलीजिंग फैक्टर के अगेंस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी? रिलीज द इट्स पिट्यूटरी हार्मोन, वो यहाँ पे एंटर होगा and then it reaches to the target site, right? ये हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस हुए हार्मोन एंटीरियर लोब में कैसे जाते हैं? तो कैसे जाते हैं? थ्रू हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। अब एक एग्जांपल लेता हूं, से फॉर एग्जांपल थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन प्रोड्यूस करती है? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। कब प्रोड्यूस करेगी? टीएसएच आरएफ, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आरएफ, हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा एंड थ्रू हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जाएगा एंड उस रिलीजिंग फैक्टर के अगेंस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करेगी? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच, and this hormone enter into this blood stream and through the blood it reaches, कहाँ जाएगा? It reaches to the thyroid stimulating hormone कौन बनाता है? thyroid gland, कहाँ जाएगा? thyroid gland, and thyroid gland उसके अगेंस्ट क्या बनाएगी? हार्मोन्स, thyroxine. So in this way pituitary gland क्या करती है? pituitary gland carry out the execution. जैसे कि स्कूल में कॉलेजेस में होता है कि मैनेजमेंट कहती है कि इस क्लास का सुबह बैच लगाओ, तो प्रिंसिपल कहता है किसी टीचर को बुला के इसका टाइम टेबल सुबह बनाओ। So like the principal pituitary gland in our body work, it carry out the execution by the command given from the hypothalamus. So these are right, and these are the hormones.
सेकेंड वन इज जो यहाँ से पोस्टीरियर लोब जो है पिट्यूटरी का, विच इज अंडर डायरेक्ट रेगुलेशन ऑफ द एक्सॉन। यहाँ पर जो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, these hormones are transported axonally through axon, थ्रू एक्सॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं, इसलिए दे आर एक्सोनली ट्रांसपोर्टेड। कैसे है? दीज आर एक्सोनली ट्रांसपोर्टेड, डायरेक्ट यहाँ पे। यहाँ कौन से? तो दो ही आते हैं। कौन से? वन इज ऑक्सीटोसिन, सेकेंड वन इज वैसोप्रेसिन। दीज आर, एंड फिर यहाँ से ब्लड का ग्रुप बनेगा 5 एंड एंथर 5। तो कितने हैं? दो ही, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। दीज आर प्रोड्यूस्ड, सिंथेसाइज्ड एंड सीक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस, but released and stored in the posterior lobe of pituitary. So this is in short. I will review in a minute. जो पिट्यूटरी ग्लैंड है एनाटॉमिकली डिवाइडेड इनटू द एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस के दो, पार्स डिस्टैलिस एंड पार्स इंटरमीडिया, दोनों मिला के बनता है एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी। एंड एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी में है इतने हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ईसीएस, एसीटीएच, एलएच एंड एफएसएच। जो दूसरा पार्ट है दैट इज द पार्स नर्वोसा, उसे कहते हैं पोस्टीरियर लोब। Posterior lobe only stored and released two hormones, oxytocin and ADH, which is synthesized by hypothalamus. Right? And there is a one lobe in between, that is pars intermedia or intermediate lobe or middle lobe, which produce only one hormone, melanocyte stimulating hormone or MSH. In the next video, we'll discuss the role of hormones of anterior lobe of the pituitary